Okay. Yes. So good evening, everyone. Good evening once again. So today would be the session for triangles, right? Basics of triangles, just for your school examinations. We will cover these topics in detail once the exam is over, right? And this would be the last maths class before your exams. Okay, right? Okay. Okay. So shall we start? Raise your hand. Start किया जाए. Okay, चलो. So when we talk about जैसे बिंदु ने लास्ट क्लास में बोला था, राइट, सिक्स वालों ने, कि दे हैव अ चैप्टर कॉल्ड एज बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना. So when we talk about basic geometrical figures, right, the first figure that we studied was line, है ना. And then we have different type of geometrical figures. So let us see what's the meaning of geometrical figures. We know that any figure which is drawn by line, right, it is your, or not just a straight line, any curved line also, it can be your geometrical figures, है ना. So when you talk about geometrical figures, or when you talk about, yeah, figures, है ना, right, figure means geometrical figures. So usually we have two-dimensional figures which can be drawn on a plane, right, or sheet of paper, है ना, right. And then we have three-dimensional figure, right, 3D, है ना, right. For example, when we talk about humans, we have three dimensions: length, breadth, and height. Yes or no, right? Three dimension. It is meaning of three dimension, है ना. Okay, and it is two dimension. Now we, right, according to our syllabus, we will be confined till two dimension for now, है ना. But when we talk about advanced wala, we will cover three dimension also. Okay, so let me ask you this: what is right, the simplest, tell me, geometrical figure that can be formed. Now when we talk about geometrical figures, we are talking about closed figure, by the way, right? We are talking about closed figures, है ना. Yes or no? Closed figures, right? So closed figures, it can either be formed by straight lines or curved lines. Yes or no? Makes sense, right? Concept, है ना? Either curved lines or straight lines, right? So let us talk about straight lines. When you talk about straight lines, the first figure that we have studied is square. No, triangle, na? Triangle, right? Can we draw figure? Can we draw a closed figure using two lines? Tell me, can we draw a closed figure using two lines? Yes No, or sir. no? No, sir. No, right? So I can say the first closed figure, right, or the minimum number of lines required, straight lines required to draw a closed figure is 3. And the closed figure is triangle. Yes or no? Right? So in how many sides are there in a triangle? I can say it is 3 sides. Yes or no? Right? Anna? So I'm saying closed figure using straight lines. Using straight lines. Yes or no? Straight lines. Okay. Second is, tell me, second is after 3 sides. Tell me, after 3 sides. Now 3 sides में बस triangle है. और कुछ बनेगा क्या 3 sides में? If we have 3 sides, no, only triangle. But when you talk about 4 sides, है ना? So we have two, so we can make 4. So 4 sides we can have multiple number of, tell me, figures, right? So yes, so first is most general is quadrilaterals, right? है ना? So quad means 4. Quad means 4, right? है ना? Quad means 4. So I can say, sir, quadrilaterals is, tell me, quadrilaterals are geometrical figures having 4 sides. Now this quadrilateral can be of different types. Okay, right? Parallelogram. Right? Now, then it can be rhombus. Square triangle, square
Rectangle. Rectangle, yes. Then square, then trapezium. Okay, then kite. Okay, got it. Right, see how many different type of quadrilaterals can be there. Then again, we will discuss about these after your exams, है ना? Then 5 side in the same way. Then we have 5 side. Pentagon. Yes, pentagon, right? 5 means pen. Pentagon. Exactly, so it is pentagon. Right, so we won't be discussing a lot about 5 sides, 6 sides, right? We just discuss the names, okay, right? Again, not diamond. Diamond is like a 3-dimensional structure. It is called as diamond structure. Okay, got it, right? So these are generally the closed figures using straight lines. Okay, then when we talked about 6 sides, it is your Hexagon. 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 Right, 6 is hex. Okay, then 7 is hept, right? Or sept. Yes, 8 is octagon, right? Octa. These are the numbers. Manogram. Okay, yes. So we will be focusing, right, on triangles for today. Okay, today we'll be focusing on triangles. So let us see, when we talk about triangles, okay, I'm expecting that all of you know the basics. Raise your hand, yes or no, right? Triangles kya hota hai? Aya na? So the first concept that we talked about is, the first concept that we should, yes, we should know is knowing the triangle, hai na? I guess everyone know the triangle, right? There's no one who don't know how to make a triangle, right? So any figure having 3 sides and 3 vertices. So when you talk about this, what are the parameters of a triangle? Tell me, parameters. How many parameters do we have in a triangle? Everyone, tell me, how many parameters? 3. No, 6, right? What 6? 3 angles, है ना? Triangles. 3 and 3 sides. Yes. And 3 vertices, sir. No, vertices again, vertices का value नहीं होता ना, है कि नहीं? Parameters means जिसका value होता है कि नहीं? Right? Yes. So vertices, now when we talk about vertices, right? Vertices का value नहीं होता, value किसका होता है? Value मेरा angles का होता है और side का होता है. Yes or no? Right? So we have 3 angles and 3 sides. Okay, makes sense, right? Now, when we talk about, so I guess all of us understood what is a triangle. Triangle have a 6 parameters, 3 angles and 3 sides. Okay, now second, types of triangles. Sir, it is based on angles and based on sides. नबील, मैंने क्या बोला था बहुत पहले, like 1-2 हफ्ते पहले, right? है ना? I know you know. कम बोलने से. है कि नहीं, right? है ना? चलो. So now when you talk about types of triangles, so think about it. If I ask you how many types of humans are there, right? So you should ask Nasser on which basis, yes or no. That is what we have studied, right? Whenever we classify anything, we have to specify the basic, right? Basis. For example, if it is based on gender, then we have male, female, yes or no, right? If it is based on, tell me, country, then we have different countries, right? Indian, European, right? American, Australian, like that, right? Anna, exactly. If it is based on color, then we have again different, right? Fair, whitish, Caucasian, right? Brown. Makes sense. So whenever we classify anything, right? You have to specify the basis, Anna. So first, on the basis of angles. Okay, now, yes,
Now you can tell me on the basis of angles. अब बताओ कितने होंगे? अब बताओ नबील. Aditya is not here and Jia is not here today. Really or in chat, sir? Yeah. Chat में तो कोई दे सकता है. ठीक है sir. Three types of triangle. Acute, right angle, obtuse angle. Awesome, very good. Now, okay, so first is acute angle triangle. So Sinchana, tell me what is the meaning of acute angle triangle? Sir, if all the angles in a triangle are acute angles, then it is known as acute angle triangle. Very good, right? So I will just draw a figure, right? So I can say, sir, if any triangle, if we talk about any triangle, if all the angles, right? If all the angles are, tell me, wait. Okay, if all the, I cannot draw a straight line. Right, yeah. If all the angles, right? For example, this angle, this angle, this angle, all the angles are less than 90 degrees, yes or no? All the angles are less than 90 degrees. So if it is X, if it is Y, if it is Z, right? So X, Y, Z, all of them should be less than 90 degree, less than 90 degree, yes or no? Makes sense? All of, yes, right? Okay. So I need not to write the definition. I hope all of you understood. Yes or no? Tell me. Okay. Yes, sir. Right. Now, second one, Vihan, tell me second one. After this, batao. Vihan, can you tell me? ऐसे तो विहान बहुत बोल रहा था. कहाँ गया? Okay. Ananya, tell me second one. Right angle triangle. Very good. Right angle triangle, है ना? So right angle triangle. So what is the meaning of right angle triangle, Ananya? Sir, if one side of the one angle is right angle, then it's Okay. called the right angle triangle. Yes, है ना? So now think about it. If one side is 90 degree, right? If one side is 90 degree, है ना? Okay. Right. If one side is 90 degrees, so what about the remaining two sides? Will it be acute or obtuse? Tell me. Will it be acute or obtuse? Acute. Acute only. है ना? Yes, acute. I cannot draw a straight line. I don't know why. I'm cursed. Okay. Right. Now, the condition, when you talk about right angle triangles, one angle is always fixed. One angle is always 90 degree. Okay. So any right angle triangle have one angle always at 90 degree. So suppose if this is X, then this angle should be, everyone tell me, then this angle should be, think about it. Everyone, think about it. Second. What is the value? What is the value? Sir, it is equilateral. 45 degree. So 45 degree. No. So it should be less than 90 degrees, sir. So less than 90. Less than? So less than 90 degrees. No. Think about it, guys. Use your brains. Sir, it is equilateral triangle. No. Again, right? I'm saying right angle triangle, right? So if this is 90, this is X. What is this angle? Batao, Nabil. I'm saying this is 90 degrees, this is X. What is this angle? Y. Well, this is Y. So what is the value of Y? What is the value of Y? This is called application based, right? Application based दिमाग लगाना होता है. We already know this. We already calculated this. Very good, Akash. Correct. Very good, Tanushree. Correct, Tanushree. है ना?
right? Sir, No, मेरा no, Nabil. That's why, there's a difference between knowledge and information, right? Okay. We know if it is 90, if it is x, and this is y. So we know y plus 90 plus x is equal to 180 degree. Yes or no? Hi, Anna. Tell me. So y is equal to 180 degree minus 90 degree minus x, which is equal to 90 degree minus x. Yes or no? Not 60, na? Because x 30 nahi hai na? It is 90 minus x. Right? Yes or no? Hi, Anna. Think about it. Got this? Sandhya, Nabil, everyone? So can I say the remaining two angles of right angle triangles are complementary? Yes or no? Tell me, note. Can I write this? Note. Yes, sir. The remaining two angles are complementary. Yes or no? Raise your hand. Yes or no? Clear hai? Yes, awesome. Chalo, very good. Very good. Okay. So ये concept clear right angle triangle का? Yeah, yes or no? Right? Now, when you talk about this right angle triangle, है ना, हम लोग यहाँ पे right angle triangle को ही पढ़ रहे हैं, because when you talk about acute angle triangle, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत simple है ना? But when you talk about right angle triangle is a very special kind of triangle. हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है right angle triangle के बारे में. याद है? हाँ है ना? How many of you remember this? Tell me. How many of you remember? We have studied a lot about right angle triangle. Sir, Pythagoras theorem is also applied in right angle triangle. Yes, right. So I can say whenever we talk about right angle triangle, सर स्क्वायर बना रहे थे. नहीं वो गलती से स्क्वायर बन गया था. Okay, so if this, tell me if this is 90 degree, okay, I'm considering this angle. My reference angle is this. Suppose I write it as x. So, and I write it as A, B, C. So first we know that if this is y, then y is equal to 90 minus x. This is first relation that we, right, studied or we understood for right angle triangle. Raise your hand, yes or no, right? Raise your hand. Okay, now second one. Now when you talk about second one, what this side BC is called? Tell me. Side BC is called as? Very good, Tanushri. One. Everyone. Batao. Sandhya correct. Nabil correct. Sinchana correct. Yes. It is called as base. Hai na? Base. Because I have taken reference angle as x. If you take reference angle as x, then it is base. Got it? Yes or no? Remember, you cannot define base and perpendicular randomly. You have to see which angle you are taking as reference. Got it? Yes or no? समझ में आ रहा है? If I have considered this angle, y angle as reference, if I have taken y angle as reference, then base would be which side? Tell me. If I would have taken, very good Tanushri, one correct. If I would have taken y as a reference, then base would be AB, not BC. ठीक है, यही तो concept है, right? That is the concept. Okay, base note करके लिख लो. Base is always with respect to reference angle. Okay, so if reference angle is x, right? If reference angle is x, is angle x, which is basically angle BCA. BCA ऐसे लिखते हैं angles को, है ना? Right?
then base would be, base क्या होगा? Tell me what is base? Base is equal to BC. BC, base is BC, है ना? And perpendicular is, tell me what is perpendicular? Yes, perpendicular will be AB. Got it? Yes or no? हाँ या ना? But if reference angle is, if reference angle is, tell me, y, है ना? Angle y, right? Which is angle BAC. जो एंगल ले है ना वो बीच में होना चाहिए. जो एंगल लिखते हैं हम लोग वो बीच में होना चाहिए. That is how we write the angle. Then tell me, in this case, what is base? Base क्या हो जाएगा? बताओ. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए. Exactly, base will be AB. Yes or no? AB और BA दोनों सही है सानवी. ठीक है. And what about perpendicular? What about perpendicular? BC, correct. BC और CB both are correct, right? Anyone have any doubt in this? ये समझ में आया? So usually people mug up, है ना? Usually people mug up, right? है कि नहीं? But हमें वो दिमाग में रखना है कि हम reference किसको ले रहे हैं. Yes or no? Raise your hand. ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आया? हाँ या ना? And hypotenuse is always, सर हम लोग जिस एंगल को रेफरेंस में रखेंगे सर वो वाला एंगल ही बेस में रहेगा क्या? see, first of all, base जो है वो define होता है एंगल के हिसाब से. समझ में आया? Right? सर मतलब कि बेस के अंदर वो वाला रेफरेंस एंगल होना चाहिए. Yes. जैसे अगर तुम BC और AC के बीच में ही होना चाहिए x reference angle should be between base and hypotenuse. ठीक है? Right? And it is also called as, base is also called as adjacent, है ना? Right? Adjacent. And it is called as opposite because reference angle के opposite होगा ना? So there's second term, base is also called as adjacent. Base, right, is also called as adjacent side. Adjacent, right? है ना? And perpendicular is opposite. Opposite. Now tell me this. If you take x, what is the opposite side? Opposite side of x. X के opposite में कौन सा side है? If you talk about this angle, इसके opposite में कौन सा side है? Right? AB. हाँ या ना? Yes or no? Right? और अगर तुम y angle लो तो y के opposite में कौन सा है? BC. That is why the definition of base and perpendicular changes depending on the angle. Clear हो गया है सबको? नबील, अब समझ में आया तुमको ये कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? Everyone. Right? एंगल बी का बेस क्या होगा सर? Again, reference angle कौन सा लेते हैं नबील बताओ? सर एंगल वाई एंड एक्स. Right? ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है. हाँ या ना? नहीं. That is the basic definition. Clear है? Right? हाँ सर. Because this is already 90 degree. हमें सोचना ही नहीं है. Okay. And AC is hypotenuse. Doesn't matter which angle you are taking as reference. AC is hypotenuse. Angle opposite to 90 degree is hypotenuse. ठीक है? Right? So ये समझ में आ गया? सर तो फिर 90 डिग्री को नहीं रख सकते क्या रेफरेंस में? नहीं ना. Reference, see 90 degree तो already known angles है ना? हाँ या ना? Right? Okay. So whenever we talk about the concept of base or perpendicular, it is with respect to other two angles, not the 90 degree angles. ठीक है ना? Okay. Now this is about the angles. This is about the angles. Now depending on the sides, we know there's a relationship between perpendicular, base and hypotenuse. What is that relationship? We have already studied. Tell me. बताओ किसको याद है? सर बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square is equals to hypotenuse square. Yes, that is called as Pythagoras theorem. Yes or no? Pythagoras theorem. Yes or no? And what is Pythagoras theorem?
What is Pythagoras theorem? Yes, 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 right. See, the thing is not Sir, these थोड़ा two draw angles can करके change. दिखा दो sir, These क्या two है? angles can change, right? But this angle is fixed, always fixed. 90 degrees always fixed. That's the definition of right angle triangle. Okay. Okay. So Pythagoras theorem, right, relates the three sides. So it says perpendicular squared plus base squared is equal to hypotenuse squared. Yes or no? Got this? This is what we have already covered. Yes, and now, right? So perpendicular square plus base square is hypotenuse square. So it doesn't matter which side you're taking as perpendicular, which side you're taking as hypotenuse. Doesn't matter. So in this case, I can say AC square plus BC square. Sorry, AC square is equal to BC square plus AB square. Yes or no? Right? Yes or no? Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? Shreya is here. Shreya is not here today, I guess. Shreya is here. So who is not here? There are three students who are not here today. Okay, chalo. Right? Now, do we have anything else in right angle triangle? Tell me, anything else in right angle triangle? I guess no. यही है. इसके बाद जो है वो higher order में आ जाएगा, है ना? Right? So this is more or less right angle triangle. Okay. Then on the basis of angle, there is third type of angle, which is called as, tell me, which is called as Obtuse angle triangle. Very good. Now, Shreya, can you tell me what is the definition of obtuse angle triangle? Tell me. Sir, one angle is obtuse. Very good. Your name is Shreya, na? Yes, sir. Yes. So, at least, or not at least, only one angle would be obtuse. Okay? It's not that there will be two angles will be obtuse, right? One angle is greater than, should be greater than 90 degree. Okay, right? Got this, everyone? So how to draw it? So it will look like something like this. It will look something like this. Okay, है ना? Like this. Got this? है ना? देखो यहाँ पे कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है? Tell me, if this is A, if this is B, this is C, then which angle is obtuse? Sir, B. B, correct. So this is your obtuse angle. ठीक है? So I guess this is easy. This is easy, yes or no? So when we talk about angles, there's a relationship between the angle is sum of all angles. There's only one relationship. Sum of all angles is equal to 180 degree. Yes or no? Hi, Anna. Raise your hand. Right? Anna. So it doesn't matter which side of which type of angle we are talking about. Any angle. If you're about any angle, sum of all the three angles is 180 degree. Okay. Now, okay, sir, this I understood. Is there any other property related to angle? Tell me. We will complete angle wala concept first, hai na? Right? Is there any other property related with angle? See, there's no theory. Whenever you talk about concepts, hai na? Right? You have to use your brain. Okay. Wait. Do not. Yes, sir. Okay. Do not think about the concept. Just think about. So do not think about the information. Hai na? Think about the concepts. Right? Let me ask you a simple problem. Suppose this is X, this is Y, this is Z, everyone, right? And this is W, right? Okay. Okay, think about it. So what is X plus Y plus Z? Tell me, what is X plus Y plus Z? 180.
180 degree. Yes or no? Raise your hand. Yes or no? So I will say equation 1. I will say equation 1. And what is angle Z plus angle W? 180. 180 degree. Can I just equate these two? क्या मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ? राम का भाई घनश्याम, घनश्याम के भाई राधे श्याम. X plus X plus Y equals. Yes, so I can say x plus y plus z is equal to z plus w. Yes or no? Hi Anna. to Z. Yes, sir. A B 180, A B 180. Yes or no? Raise your hand. Sir, how is Z plus W 180 degree? ये straight line है ना बिंदु? We studied ना linear pair. Yes or no? Understood. Got it. Last class में ना linear pair है कि नहीं? Sir, it's Ananya. Oh Ananya, sorry Ananya. Right Ananya, got it Ananya? Yes, sir. Okay, so can we cancel z? Right? So what we will get? Tell me what we will get. Can I say, sir, angle W is equal to angle X plus angle Y? Yes, sir. So can I say, sir, exterior angle, any exterior angle is equal to sum of opposite interior angles? Hi Anna. Right? So it is called as exterior sum property. Sir, exterior angle properties, sir. Exterior sum angle property. Exterior angle, or this. You can just write. सर टेक्स्ट बुक में यही सभी क्वेश्चन भर है सर, सेम ऐसे ही, अलग अलग. और क्या सिंपल है. मतलब अभी कोई नया कॉन्सेप्ट था क्या? टेल मी, ये कोई नया कॉन्सेप्ट था क्या? नो सर. राइट. सी हाउ कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ड. अरे सर हम बोलो नबील. सर हम लोग के क्लास में से ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए हमारे टीचर ने बोला कि एक प्रॉपर्टी है W is equals to Y plus X, sum of exterior angles is equals to sum of opposite interior angles. ये नहीं बताया कि कैसे आया, डायरेक्ट बता दिया कि ये होता है. बताओ ना, वही बताओ कि तुमको ये कोई नया प्रॉपर्टी है क्या? अगर मान लो तुमको ये नहीं पता होता, मान लो तुमको ये नहीं पता होता, राइट, और तुम्हें ये दो एंगल्स पता होते, कैन यू फाइंड W? थिंक अबाउट इट. तुमको अगर ये मान लो 30 डिग्री पता होता, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, ठीक है? सी दैट इज व्हाई ना, I hope all of you are understanding that what's the difference between formula based learning and concept based learning. Yes or no? Right? So suppose a problem is like this, right? Suppose a problem is like this. Okay, ये है तुम्हारा 30 डिग्री और ये तुम्हारा मान लो 70 डिग्री, and you have to find this angle. Find this angle X. Can you do that without knowing the concept? Right, without knowing the exterior angle concept. So हमें basic पता है सर, है ना? 100 degrees. ये कितना है? Can I find this angle first? Can I find this angle first? Yes or no? Tell me. Right? Yes. Using angles and property. 80 degree. Yes, sir. Yes. देखो how easy this concept is, right? तुम लोग ना फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे ना, तो हर चीज बहुत इजी होगी. So y is equal to what? So y is equal to 80 degree, है ना? Now, exactly. After finding y, what is x? Sir, y. So now we can subtract 80 from 180. Yes, because it is a linear pair. So what is? Tell me, what is x? X is 180 degree minus 80 degree, which is equal to 100 degree, है ना? So see, whenever we talk about maths, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? Maths में क्या होता है? One concept is built on another concept. मैथ्स में ना बहुत कम चीजें होती हैं जिसमें हमको बोला होता है कि ये होता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर्मुलेटेड ओवर वन कॉन्सेप्ट. जैसे ह्यूरोन्स फॉर्मूला हुआ है ना. सो ह्यूरोन्स फॉर्मूला वाज एक्चुअली, टेल मी, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट. ओके, so now tell me, you can solve this, yes or no? Right? So think about it. Do you need to mug up the formula? Yes or no? Tell me. No, sir. No, right? Sir. You just have to know the basics and linear equation in one variable. Hi Anna. Yes or no? Right? Yes. Okay. Now let me ask you this simple problem. Let me see how many of you can do that. Let me see how many of you can solve it. Okay? Think about it.
सर चैट बॉक्स में लिखने को बोल रहे सर, अनम्यूट करके बोलते हैं। Yes, yes. Yes, Tanushree too. Tell me, what's the doubt? Tell me, Tanushree too. Yes, 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 yes. Yes, na Tanushree. है कि नहीं? Right? So no, 30 plus 70 is not x plus y. 30 plus 70 is just x. 30 plus 70, so it is like this now. Wait, it is like 30 plus 70 is just x, right? है ना? Angle x is equal to 30 degree plus 70 degree using property. This is directly using property. Which property? This property, x triangle property. Got it? Directly. Okay? If you remember the property, if you understood it, you can use it directly. If not, then you can just solve it like this. Okay. Now this is based on, yes, angles. Now let us see. On the basis of sides, है ना? On the basis of sides. Okay. So when you talk about sides, right, we talked about this length of the side, length of the side, right? Okay, so if I talk about length of the side, the first would be, tell me what would be the first one? Yeah, after this I'll give. Okay, after this we'll have it, because we don't have that time, we'll play directly Kahoot, right? So first, all three sides are different. Yes or no? All three sides are different, right? They are called as, yes, scalene triangle. So when you talk about all three sides, right, it means length of all these sides, right? Length. Yeah, right? So this is called as scalene. Okay, right? Scalene triangle. Yes or no? Clear hai? Yes. Okay. Spelling might be wrong, so it's fine. Okay. Right? Okay. Chalo. So this is easy. This is easy, sir. This is actually easy, sir. Any triangle, right? Any triangle which has all the three different sides are your scalene triangle. Right? So yes, sir. है ना? This is, suppose this is 3 unit, this is 5 unit, this is 6 unit, right? है ना? So this is a scalene triangle ABC. Okay. Now, when you talk about this, if you talk about scalene triangle, think about it. What do you think? ये तीन जो angles होंगे, will they be equal or not? ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया. Will they be equal? No, right? So in scalene triangle, the angles are also not equal. X does not equal to y, does not equal to z. Got it? Right? No, it will not be equal. It will not be equal. Okay, that is the property. ठीक है ना? Because खुद सोचो ना, right? खुद सोचे, but visualize करो. अगर equal हो तो side भी तो equal होगा. We will see that as a property, है ना? Okay, right? So even angles will not be equal. So that is the first one. Second, two sides are equal. Two sides are equal. So when two sides are equal, it is called as, बताओ क्या बोलेंगे इसको? Easy. Very good Sani, very good Akash. सबको पता है. Awesome. कितने smart तुम लोग. Isosceles, right? है ना? Isosceles triangle. Right angle also can be there, na Tanushree? Right angle can also be there, right? There are two different classifications. So right angle triangle can be either scalene or isosceles. Got it? Hayana. Right angle triangle can be scalene or isosceles depending on the angles. Okay, right? There are two different classifications. So suppose this is 10. So this, any two side will be this. Now tell me, if these two sides are equal, what about these two angles? Opposite angles, tell me. Common sense, using common sense.
What about these two angles? Will it be equal? Yes, very good. Yes, they will be equal. If it is x, this is also x. So I can say in equilateral triangle, note A, B, C. If AB is equal to AC, है ना? Right? Then angle B is equal to angle C. Got it? Right? So the angle opposite to equal sides are equal. Right? We can write like this. Angle opposite to equal sides are equal. Okay, got it? Not 60, na? Not 60. जरूरी नहीं है 60 हो, है ना? For example, if I say that this angle is 30 degree, this angle is 30 degree. What is x? Everyone, now tell me. If angle A is equal to this question is this: if angle A is equal to 30 degree, then what is angle B, angle C? Everyone, find it. Find it. Very good, Ananya. Correct. Awesome, Ananya. सही है. Very good, Shreya. Correct. Equations, linear equations, है ना? Very good. We have done this in linear equations. We have done this problem like this, right? Sir, it is what? X plus 30 degree is equal to 180 degree. Very good, Nabil, है ना? So 2x is equal to 150 degree. Then x is equal to 75 degree. Yes or no? क्या श्रेय, क्या कैलकुलेट कर रहे हो श्रेय? ऐसे कैसे काम चलेगा श्रेय? राइट? यस और नो? गॉट दिस? वेरी गुड बिंदु, करेक्ट बिंदु, है ना? है कि नहीं? Okay, so you understood this concept? 75 degree. Very good, Tamshri too. Chalo, right? So remember, always two sides of right, isosceles triangles are equal, and two sides are equal, then two angles are also equal. Now third one is very easy. Equilateral triangle. Right? Yes, all three sides are equal. All three sides are equal. Now tell me, if all three sides are equal, what about angle? Tell me, if all three sides are equal, ye bhi, right? Yes, awesome, correct, है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें सब कुछ equal होता है. If this is 10, this is also 10, this is also 10, right? So this angle is also equal. And if all of them are equal, so in equilateral triangle, always the angle are 60 degree. Always. Equilateral triangle means angle is 60 degree, always, no exception. Clear hai? Simple enough? Tell me, yes or no? Yes. Now, tell me, so this is what? This is just the introduction. Just the introduction. Ayana. Just introduction. We just knew what are the different type of triangles. Yes or no? Right? और तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है कि नहीं? अभी हमने बस इंट्रोडक्शन ही किया और तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया. राइट? राइट नबील? यस और नो? टेल मी. we just studied the introduction. सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये. हमने अब तक चैप्टर स्टार्ट किया है, राइट? बट तुम्हारा सिलेबस यहीं पे खत्म हो गया है ना? So now you understood why I said कि तुम्हारा सिलेबस तो बहुत इजी है, right? है ना? Your syllabus can be completed within few months only. Now tell me, इसमें किसी को दिक्कत है? सर देखो सर, आप कितने टैलेंटेड सर. आइए, जो मैम ये 1 साल तक इसको पढ़ाती थी, उन मैम का कोर्स आपने 1 दिन में करा दिया. वही बना कि देखो दिन भी नहीं लगा सर, 1 घंटा. चलो, so हम लोग अभी अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे काहूट खेल कर. यस और नो? रेडी फॉर काहूट? यस सर 3 बैच फुल. स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ये एकदम. और नाम नहीं कटवा, मेरा नाक कोई नहीं कटवाएगा.
Just give me a minute. आज right, triangles ना? Where is triangle? Triangle किधर गया? The triangles. Okay. Sir, the screen is stuck, sir. Yeah, yep. Okay. तो ट्रायंगल्स में देखो, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हैं, ठीक है, कुछ और चीज बचे हैं, तो उसको हम लोग आज कितने Okay. बारिश सर? आज कितने बूंद? wait, एक दो काउंट करेंगे फिर वो करेंगे, ठीक है. Case These are study. the basic, हाँ, these are the basic parameters, right? There are some more parameters वो भी cover करेंगे. Okay, but let us play one count first. सर So this is the just basics, है ना? इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट का क्लियर करेंगे, फिर एक और काउंट करेंगे. Okay. The number of vertices, sides and angles in a triangle are respectively. Easy enough. Super easy. Okay, Priya. This is easy. This is easy. सर क्या कर रहे हो सर? इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना, कोई गलत नहीं होना चाहिए इसमें, मैंने ऑलरेडी बता रखा है. हाँ सर, देखते हैं सर कितने लोग का गलत. एक गलत कैसे हो गया? 3 ना, 3 vertices, right? Yes, correct. चलो. Next. In triangle ABC, the side opposite to vertex C, side opposite to vertex C, ठीक है? बताना. Side opposite to vertex C. बताओ. सर फोटो तो देख नहीं तो फोटो की जरूरत नहीं है ना, तुम बना के देखो ना. फोटो की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन होगा. अरे स्क्वायर थोड़ी है सर. यस, ए बी ना गाइस, कॉमन सेंस. हाँ या ना? अगर सी नहीं है अपोजिट वाला, तो ऑब्वियसली वो ए बी होगा ना. यस और नो? सर मुझे लगा एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट होगा, तो मैंने नोट किया. चलो, बहुत कम लोग हैं. ध्यान गलत हो गया. 6 पे आ गया मैं. ठीक है, नेक्स्ट. इन स्केलेन ट्रायंगल ऑल साइड्स विल बी इक्वल लेंथ. ट्रू फॉल्स? गलत दब गया सर मेरे से, गलत. ये गलत नहीं होना चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? गलत दब गया. ओके, दिस इज फॉल्स ना. सही दबा. That one is Vihan. ओके, नेक्स्ट. मैं काम कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, मैसेज कर दो. The measure of each angle in an equilateral triangle is अभी किया हम लोगों ने. just किया हम लोगों ने भी. Okay, Sandhya. Correct. Awesome. 60 degree. Very good. सर मुझे लगा ये करेक्ट करके मैं आ जाऊंगा पोडियम में, मगर नहीं. बाकी लोग करें. ये क्या है? अनन्या तैयार बैठी है. An obtuse angle triangle can have only one obtuse angle. ये भी मैंने बताया. Yes or no? सर इस बार मेरे को लग रहा है मैं ऊपर आऊंगा. सबका सही रहेगा तो ऊपर नहीं आ पाए. हाँ, सबका सही होना चाहिए ये, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बोला और मैंने लिखा भी है. सर इसमें तो मेरे ख्याल से सब ये गलत है. पांचों के पांचों में नहीं सबका सही गलत, होना चाहिए. मैं ही हूँ सर वो अजूबा. कैसे? सर ये कैसे हुआ सर, मेरे को बताओ जरा. के लिए 8. अरे ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया ना. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इसमें मोर देन 91 लेस देन 80. कॉमन सेंस मैंने कल भी बताया था. अगर दो एंगल 90 से सर हो सकते हैं सर. सपोज दिस वन एंगल x is 120, एंगल y is equal to ऑब्ट्यूज में नहीं, तुम 90 डिग्री ले लो भाई. व्हाट इज एंगल z? सर 180 क्रॉस. 180 तो 80 क्रॉस हो गया. यस और नो? यस सर. सो नॉट पॉसिबल. समझ में आया? और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? सर इवन इफ विहान सदमे में है कि नहीं विहान? समझ में आ गया कि नहीं विहान? ओके, राइट. सो वी हैव apart from angles and sides we have 3 more parameters. ठीक है, हम लोगों के पास 3 और पैरामीटर्स हैं. तो देखते हैं वो पैरामीटर्स क्या है ना. सो दे आर कॉल्ड एज
they're not हाँ these. सर वो तो स्क्वायर बन जाएगा। नहीं एग्जैक्टली राइट, स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बनेगा, कुछ बनेगा नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है ना। सो अदर पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल और कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स। So when you talk about this, ठीक है, other components, so now let us draw, right? Let us understand, और ये तुम लोग दिमाग में रखना, ये काफी important है ये, ठीक है। So suppose we are talking about any type of triangle, है ना, this is A, this is B, this is C, okay, right? So I can draw a line from A on B, हाँ या ना, यस सर। right? Suppose I draw a line from A on B like this. Sir, yes sir. Sir, median. Wait, Sir, wait, median. wait. Median. Suppose this is D. What is this line? Median. Middle. Sir, of- AD. बंटवारा। AD. नाम is AD. नाम of line is AD. So क्या बोलेंगे? Sir, median. सर हमारे स्कूल में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। हाँ सर। First option is median. स्कूल में पहुंच गए सर टेक्नोलॉजी। दिस इज स्लो है सर। Second option is altitude. Sir, हम तो लोग क्या दूसरा होता है सर altitude भी पढ़ा है, sir, median भी पढ़ा है। Angle bisector. ये कैसा नहीं Sir, हमें ये तीनों पढ़ाया गया है sir। Okay. हाँ सर What is AD? AD क्या है? बताओ, नबील बताएगा, नबील को पढ़ाया गया ना, नबील बताएगा। Sir, AD is a median. AD is a median. Now the answer is Altitude. Sir, altitude भी होगा sir। don't know. पूछो क्यों? पूछो। सर क्योंकि पता ही नहीं सर वो करेक्ट मिडल में है कि नहीं। Exactly. मुझे इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है। Yes or no? हाँ या ना? Right? सर अगर दिया हाँ। जाता होता तो क्या मैं होता? वही सोचा सर। वही बोल रहा हूँ। 6th वाले ध्यान दो। So suppose this is any random line, depending on conditions, it may be median, it may be altitude, it may be angle bisector, है ना? Right? So what are these conditions? So let us see. Condition 1. एग्जैक्ट ए, एग्जैक्ट डी। Condition 1. So first condition क्या है? So condition 1 is, suppose this line divides this side BC into equal parts, है ना? So सर नहीं condition तो one is, परपेंडिकुलर सीधा सर। hey, AD divides BC equally, which means BD is equal to DC, right? If this is the condition, right? If this is the condition, then AD is called as median. AD is median. Got it, everyone? Raise your hand. Got it? This is not a right angle triangle, ना संध्या? ये right angle triangle की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, right? समझ में आ रहा है ना? This is any random triangle, any triangle. Got it, संध्या? है कि नहीं? Yes sir। Right? So for any triangle, if a line from this vertex on its opposite side bisects the opposite side, equal अगर काटेगा, then it is your median. Got it? Yes or no? This is condition 1. Make sense? Yes or no? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। Okay. Now what is second condition? Let us write it down. These are very important concepts. Condition 2, right? So if AD is perpendicular उसमें आता है ना, 90 degree बना रहा है, right? यस सर। Perpendicular to BC, right? AD is perpendicular to BC, which means angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree. हाँ या ना? ये और ये दोनों 90 हो जाएगा। सर फिर ये altitude बन जाएगा ना सर? Exactly. So this is called as altitude then. AD
is called as सर एल्टीट्यूड से हाइट पता चलता है. altitude. Yes, altitude को height भी बोलते हैं. Altitude और height. Height of A from BC. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हाथ चालू, raise your hand. Everyone is getting this? हाँ Tell me. सर. Yes, sir. Right? So depending on the condition, है ना, depending on the condition, it may be median, it may be altitude, or it may be both. है ना, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? सर एक बार Right? एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है. ओके ना, अब एंगल बाइसेक्ट क्या है? नाम क्या है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना. बाइसेक्ट मतलब आधा आधा काटना. केक कटिंग. राइट, एग्जैक्टली. ना सपोज ये टोटल एंगल जो है, ये बड़ा वाला जो एंगल जो है, सपोज दिस इज योर 80 डिग्री, सपोज दिस एंगल इज 80 डिग्री, है ना, और ये लाइन इसको दोनों आधा आधा में काट रहा है, एकदम पक्का आधा आधा काट रहा है. मींस इट इज आल्सो 40 डिग्री, दिस इज आल्सो 40 डिग्री. 40 यस. समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? राइट. सैंडविच को हम बीच से काट रहे हैं, सैंडविच को इक्वली काट रहे हैं, है कि नहीं, एंगल के हिसाब से. राइट. सर तो मीडियन हर बार एंगल बाइसेक्टर. नहीं नहीं नहीं. राइट, यहाँ पे तुमको ट्रायंगल्स कैसे दिख रहा है? ट्रायंगल तुमको क्या दिख रहा है? तुमको ट्रायंगल आइसोसेलेस टाइप दिख रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना. स्क्रीन ट्रायंगल बनाएंगे ना तो तुमको नहीं समझ में आएगा ऐसे. राइट. सो मैं आगे बताऊंगा. हाँ सर, वो बीच में नहीं आएगा. कभी कभी मीडियन टेढ़ा भी जाता है सर, a bit slanted. एग्जैक्ट, बिकॉज़ यहाँ पे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसीलिए will drop. So if AD bisects मतलब क्या होता है? Cut in half. Cut in half sir. Divide in half. Yes, divide in half, है ना? Right? Which angle? Tell me which angle? BAC, angle A. हाँ या ना? AD angle A को divide कर रहा है, right? Angle A, है ना? Then AD is called as, क्या बोलेंगे उसको? एंगल बाइसेक्टर. Angle bisector. Very good. Now अब देखेंगे, अब हम देखेंगे. ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, ये तो मुझे डायग्राम में पता नहीं चल रहा था. लेट अस सी. हम सुंदर सा एक डायग्राम बनाएंगे. सर अब आप सुंदर ने सर स्केलिंग बना. बड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे. तो और अति सुंदर. राइट. ओके, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ओके, चलिए अब हम बनाएंगे यहाँ पे सुंदर सुंदर सा लाइन. मीडियन. वेट Don't know. वेट. अरे सर स्ट्रेट. okay, now wait Sanjana, I'll show. So this is 90 degree, Okay. this is D, Attitude. this is O, this is P. C. Here this is 5, this is 6, this Sir, 4, that is P. this is Sir, 8, that is P. and here BD is equal to DC, and this angle is equal to this angle. अरे सर सर वो P सर हाँ, आपने सर, 90 समझ डिग्री के नीचे क्या लिखा है सर? सर आपने 90 डिग्री के नीचे क्या लिखा है? P, right? ओके सर. So बताओ, which of them is median, which of them is angle bisector, which of them is सर ऑरेंज. सर रेडी. red वाला क्या है? Red line क्या है? Median, correct. So red is median. Yes or no? अब समझ में आ गया सिंचना? यस सर. Okay, blue वाला क्या है? What is blue वाला? सर बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर. Yes, angle bisector. और green वाला क्या है? एटीट्यूड. एल्टीट्यूड. Altitude. अब बताओ, ये तो सिर्फ
एक वर्टाइस का है ना, yes or no? This is only one vertices, right? I can have from this vertex also, this vertex also, yes or no? Yes, sir. Right? So what do you think? What is the total number of median? Sir, 3. सर आपने सारा डाउट क्लियर कर दिया सर, मैम अच्छे से नहीं पढ़ाई थी। Sir, 3. 3, correct, 3 Sir, median. Total number of altitude कितना होना चाहिए बताओ? Sir, 1. एक कैसे? B से भी तो हो सकता है ना, B से भी तो हो सकता है, B से यहाँ पे आ गया, right? हाँ सर, सर Agree? 2. Three. सर बी से और C सी ना, से होगा A सर, से B लाइन से के C ऊपर से, जाए। right? और total number of angle bisector? 1. ये भी 3 तीन 3 ना, 3 right? ये भी 3. Got it? हाँ सर, Okay. Now next सवाल, ये सबको समझ में आया नंबर? हाँ सर, ठीक यस बताओ, सर। जो AD है, जो मीडियन है, क्वेश्चन इज दिस, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द concept. कॉन्सेप्ट चेक सर। Which of these can lie outside हाँ सर मुझे पता है सर, सर मुझे पता चलाई, है सर चलाई। the सर, triangle? चलिए सर, मैं बोलूँ सर मैं बोलूँ। Wait. सर मैसेज। Yes, message. ठीक है So सर, the option is A, median. Option B, altitude. अरे सर मेरा गलत हो गया सर, सॉरी सर। सर मेरा सर, सही मैंने कैसे? Bisector. सर मैंने गलत डाल दिया सर, गलती से। संध्या बताओ, सोचो सब कोई, प्रिया, तनुश्री, विहान, बिंदु। सर मैंने अभी जो डाला सर, मैंने दूसरी बार जो डाला है वो देखिए सर। Yes, Sinchana, I will show you. Don't worry. सर आप वीडियो स्पॉटलाइट करो। श्रेय, medians मैं बताऊं ना, अभी काउंट में क्लियर हो जाएगा। Median is basically the line. Median is the line which divides the opposite side equally, है ना? Median is a line which divides the line opposite side BC equally. Got it? है ना? Perpendicular bisector, sorry, altitude is a line which is perpendicular to the opposite side. Written, right? Okay. Now, when you talk about obtuse angle triangle, let us see. When you talk about obtuse angle triangle, नहीं सर, ऑल्टीट्यूड बाहर आएगा। exactly, हाँ, है ना? क्योंकि सर बस हाइट चाहिए रहता है तो सिर्फ नीचे की तरफ आएगा। Exactly. जैसे अब देखो, ये एक ट्रायंगल है, obtuse angle triangle है, yes or no? यस सर। Okay. Now, if you talk about this, suppose this is A, this is B, this is C, है ना? I'm just talking about altitude. I'm just talking about altitude for now. Okay? I'm just talking about altitude for now. Now, when you talk about altitude from C, ठीक है? So, what do you think, sir? Okay, altitude from B. First of all, altitude from B. So, altitude from B would be like this. सर Yes or no? एल्टीट्यूड। Altitude 90 यानी ये हाँ सर, हाँ। altitude हमेशा अपोजिट साइड पे होता है, yes or no? What सर about मतलब कि उसका दोनों एल्टीट्यूड का दोनों साइड 90 डिग्री होना चाहिए। altitude जो है वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा अपोजिट साइड पे, ठीक है ना? Yes, Now, sir. when you talk about this, think about it. If you talk about this, है ना? यहाँ से हम extend करेंगे इसको. Wait. I don't know. I cannot draw a line freehand. Okay. Right. Okay. Now अब बताओ, ये A से अगर तुम perpendicular draw कर रहे हो, if you're drawing perpendicular from A, think about it. If you're drawing perpendicular from A like this, okay, tell me, बताओ ये triangle के अंदर है कि triangle के बाहर? Because this is the altitude, ना? This is the altitude. This is the height of A from BC. Is this inside or outside? Outside. Outside. This is outside. Outside, sir.
outside the triangle. Now in the same way, if you talk about this side, everyone think about it, right? If you talk about this one, C से तो AB को extend करो, AB को extend करेंगे ऐसे, है ना? AB को extend किया ऐसे हमने और C से draw कर लिया perpendicular, C से draw किया, right? अब बताओ ये जो है, right, this altitude from C, it is inside the triangle or outside the triangle? Tell me, inside or outside? Outside. This is the extended side only, ना? This is the extended side only, Tanushree, right? ये कुछ नहीं, बस extended side है कि नहीं? है कि नहीं? Got it? Black one, blue one are just the extended side. Okay? ये वाला कैसे हुआ एल्टीट्यूड सर? ये 90 डिग्री है कि नहीं अपोजिट साइड पे? 90 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री ना? वो तो आउटसाइड नहीं है। दो किसने बोला कि हमेशा आउटसाइड होगा? It can be, the answer is altitude can be outside and inside. either inside or outside, or outside. सर कोई भी आउटसाइड इनसाइड हो सकता है, लेकिन भी वैसा है कि आउटसाइड। सर लगता है आप अब शुरू माउस से लिखना शुरू कर दिया आपने। हाँ, बहुत गंदा हैंडराइटिंग हो गया, ठीक है, एनीवेज ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बट मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर आर ऑलवेज इनसाइड, यस और नो? ठीक है, नोट। हाँ सर, उसका मीनिंग ही वैसा है। एग्जैक्टली, नोट मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर। अभी आप थोड़ी देर में बोलोगे, अगर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट, ये कोर्स खत्म हो गया है लास्ट क्लास की तरह? मैं झूठ बोलूंगा क्या? कोर्स तो कब का खत्म हो चुका है सर। नहीं सर, ठीक है, आपका माइंडसेट यस, आउटसाइड और इनसाइड डिपेंड्स ऑन फिगर, है ना? जैसे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए एल्टीट्यूड विल बी आउटसाइड, है ना? सर राइट एंगल ट्रायंगल में तो उसके ऊपर ही आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक एल्टीट्यूड वही साइड ही है कि नहीं? राइट, है ना? If you talk about right angle triangle, think about it. परपेंडिकुलर साइड। Yes, perpendicular वाला. If you talk about right angle triangle, think about it. Right, in right angle triangle, don't you think, sir, तीन में से दो right angle, दो altitude तो side ही है? Yes or no? Out of three altitudes, two altitudes are side only. A, B, C. अब बताओ, A से altitude BC पे ये है AB, और C से AB पे altitude BC है, right? Got it? आया ना? Tell me, Anushree? Okay, right. अब काहूट हम असाइन कर देंगे, ठीक है? तो नहीं सर, स्पीड से करा दो सर, प्लीज सर। super easy. Yes, Tanushree. This is correct now. This is correct, right? Guys, कैसे होगी? कैसे राइट? नाक कटवाओगे मेरा तुम लोग? क्या था? येलो क्लिक करा था, ग्रीन हो गया। AC square is equal to AB square plus सर लगता है कि उन्होंने क्या किया सर, 8 + 6 = 14 वही सेंटीमीटर। किया है, पाप किया सबने। So it is 8 square plus 6 square. 8 square कितना है? 64. सर आपने ना नोट्स में स्पेशली लिखा था सर, AB सर बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स हाइपोटेन्यूज वो पाप है ना? मैंने लिखा था वो पाप है, राइट?
है ना, हाँ सर। ठीक है, का अंडर रूट, एंड वी नो दैट इट इज बेसिकली 10, ठीक है। सर बहुत बहुत हाँ बहुत सर। बड़ा सा लिखा था PA। और क्या कि ये पाप नहीं करना है, जनरली ये पाप करते हैं लोग। सर और साथ में आपने एक चेहरा भी बनाया था। सर मेरा आवाज आ रहा है? आकाश की तो आ रही है मगर सर म्यूट हो गए। हेलो ये सर। सारे सवाल क्लास में करवाए हुए हैं, हाँ या ना? हाँ सर, सेम सवाल। अब बताओ, अब तो मैं रो दूंगा, सही बोल रहा हूँ मैं, राइट। सर आंसू नहीं दिख रहा सर, वीडियो ऑन करो। अब मैं आंसू दिखाऊंगा ही नहीं अपना। सर आकाश ने भी रॉन्ग किया है, बड़ा बोल रहा है। So 13 square is equal to 5 square plus x square, yes or no? So x square is equal to what? 13 square is 169 minus 5 square is 25, which is equal to 144. 144 किसका स्क्वायर है बताओ? सर 13 into 13 इतनी जल्दी नहीं होता सर, ये आप 20, ये 19 into 10 दे, ये 9 दे दोगे, 8 दे दोगे तो हो जाएगा, पर 13 into 13 नहीं होता है सर। होना है ना, ये होना है, कैसे नहीं होता है, होना है। सर मैं किसी भी डबल डिजिट नंबर जैसे कि 77 हो गया, वो सिंगल डिजिट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 उसको मैं कर सकता हूँ सर मन में। और वो मैं पढ़ा था ना कैसे करना है, भूल गए क्या? Okay, find out if the triangle of sides 8, 15, 17, right, can be right angle triangle. Tell me. Yes, no, can't say. सम प्रॉपर्टी है सर इसमें। सर लगता है आपने ड्राइंग के लिए टाइम दिया है। ज्यादा ही टाइम दे दिया सर। नहीं, मैंने सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है। अच्छा, out of perpendicular base and hypotenuse, which side is the longest? 17 Exactly. So, if it is a right angle triangle, then 17 should be hypotenuse. Yes or no? सर पहले स्किप करो। ओ हाँ ना सर, सर मैंने कुछ और ही प्रॉपर्टी। हाँ या ना, समझ में आया? देखो इतने लोग गलत किए हैं, तो अगर ये hypotenuse होना चाहिए, सर मैंने आंसर शीट 3 है मेरी सर रॉन्ग करने की मगर 8 square plus 15 square होना चाहिए, yes or no? If this is true, then it is right angle triangle. Now let us see what is 17 square. 17 into 17, बताओ, 9. Then tell me 20. सर Yes. 28 कैसे सर? 7 into 7, 49. 49 7 answer मंथ 4. 7 into 7. Okay, wait. Not wait. 11 7 into 7 to 1 plus 7 into 1. 14. 14 plus 4. 18 का 8 हमचा 1. 1 into 1 2, right? है ना? तो यहाँ पे 2. अब समझ में आया? हाँ सर। This is 289 और this is क्या है? 64 plus 225. हाँ सर। सर आप तो ह्यूमन कैलकुलेटर हो सर। So सही है सर, true. Yes or no? सर ट्रू नहीं सर, यस। सर Yes. मेरी आंसर स्ट्रिक 3 की है सर, सही की मगर गलत? करेक्ट करने की नहीं, रॉन्ग करने की। चलो कोई नहीं। For the given triangle, the correct relationship is, बताओ। सर इतना इजी के लिए मैं इतना टाइम ले ले सर। सर मैं भी पता नहीं क्यों। अरे सर गलत हो गया सर, शिट। सर मैं सबको बता देता हूँ सर, वो गलती कभी नहीं करने की। पूरे के पूरे 25 सेकंड बाद बताना। ठीक है सर स्किप सर। सर गलती मेरी ये कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑप्शन डी कभी नहीं दबाने का। वही सर। अभी हम लोगों ने देखा था, राइट? सर इसलिए नहीं सही किया।
कैसे 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 मतलब कैसे कर सकते हो ये पाप, मतलब कैसे कर सकते हो, राइट? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं कौन आई? से एंगल से राइट एंगल है? ये 35 है, ये 55 है, ये एंगल कितना है बताइए आप, बताइए। हाँ हाँ वो उधर, हाँ हाँ आप बताइए हमको, जनता जवाब चाहती है। हाँ वो दरअसल क्या दरअसल? कुछ नहीं, हो गया सर। ठीक है, दिमाग नहीं लगा रहे आप लोग। हाँ सर, सर मुझे देर से दिमाग आई है। यही होता है, यही होता है, राइट? 35 प्लस 55 इज 90, सो एक्स कितना हो गया? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर ऊपर से। सो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप लोग सोचते नहीं हो। हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? which of the बीसी बीसी BC? So BC square is equal to what? AB square plus प्लस बीसी स्क्वायर। अब बताइए आप लोग। सर आंसर लिखा है नीचे इसलिए बोल रहे हैं कौन है। नहीं, बताइए आप लोग, अब मैं क्या करूं? सर जल्दीबाजी सर, अगर जल्दी नहीं करते तो चाहे हमारे 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हो, 1 आउट ऑफ 5 भी कर देता है। सर ठीक है, सर चलिए। सर सर मैं बताता हूँ